Sorry, I couldn't hear you. with the Indian perspective. Yeah, the why I'm here, it defines at all, like, why I'm here today, because I'm being an Indian. I'm riding this bike in UAE, which is Dubai. Dubai has a autodrome, which India doesn't have a autodrome at in all the cities. It's only in India is such a big country where one have to reach to a booth circuit, which is last week held the MotoGP racing. Yes, so the main reason is to come to this place is because all these years, in last 10 years, I was racing in UAE. Okay, I'm the fastest Indian as on today on the 600 and the 1000 cc, which have achieved the mark. And I'm proud to say, like, I'm an Indian achieving in UAE and out of odds, like people coming from all over the world, which is most of them are Europeans, and which I felt like, since I'm an Indian and the MotoGPs come to India, a lot of maybe the young youth, they wanted to race. So I thought, like, I have a platform which is called DSBK, which I was organized all these years in Dubai. Why not come to India and support my people? That's the only interest which brought me here. बाइकिंग में आप जब देखते हैं बाकी do we have more aspirants from India back in UAE or the biking culture in India? आपका क्या perspective है इस बात को लेकर? बाइक का कल्चर इंडिया में बहुत है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं. सो व्हाट आई एम गिविंग बैक टू माय कम्युनिटी इज़ बाइकिंग कम्युनिटी इज़ द रेसिंग प्लेटफॉर्म. जिसके पास टैलेंट है उसको दिखाने के लिए इधर मौका नहीं है. सो विच आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस देम फ्रॉम DSBK what we can do. If young youth has a potential in him, I have a platform. So बस ये bridging between the gap, this is what my main concern is at the moment. I hope that convince you, like, why I'm here. Absolutely. Yeah. So when you share this thought with our Indian community and bikers races, when you share this thought with them that you're going to be arriving, announced rather that you're going to be in India, तो क्या response मिला आपको? We are announcing right now, this is a platform why we have come. While this was happening, While this was happening, everyone's excited. They want to come. They want us to come here. They also want to come to Dubai and participate. ये एक option है उनके लिए, एक opportunity है. For an opportunity to materialize, उसके लिए there has to be a definitive purpose. उसके लिए हम यहाँ आए हैं. अगर हम इसको दुबई में करेंगे, we want Indians to participate. They're excited. They want to know details क्या है. Details हमारे website में आएंगे. और हम जब नेक्स्ट ईयर इंडिया आने वाले हैं उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो भी हमारे वेबसाइट पे आएंगे. द बाइकिंग कम्युनिटी इन इंडिया इज़ प्रॉब्ली द लार्जेस्ट. यहाँ बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है बाइकिंग सर्किट को लेकर, लेकिन एवेन्यूज़ बहुत कम है. वी डोंट वांट पीपल टू राइड सुपर बाइक्स ओनली ऑन द रोड्स. दे आर मेंट ऑल्सो फॉर द ट्रैक्स वे आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं. यू कैन प्रॉब्ली डू समथिंग ग्रेट विद इट. सो दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म वे वी वॉन्ट टू शेयर दैट ये हम करते हैं. We want the youth of India, we want the bike lovers to come on board with us. वो आए हमारे साथ, भले वो दुबई में आए रेस करने के लिए या इंडिया में हम आ रहे हैं, to join hands with us, because we all can grow only if we grow together. The excitement is already there in the market. Very true. आपका इतना एक्सपीरियंस है बाइकिंग में बेसिकली, लेकिन आप क्या टिप्स देना चाहेंगे फॉर पीपल आउट देयर हु रियली वांट टू गेट इनटू दिस? सी, मेरा मेन कंसर्न यही होगा कि जो भी बच्चा या समझो कि एनी पेरेंट, दे वोंट लेट देयर किड्स टू गो इनटू द बाइकिंग. बट बीइंग अ रेसर, आई एम अ रेसर सिंस लास्ट 10 years, as I told you. My son is already a racer. He raced in Bahrain and he's the only he's the fastest racer on the 125cc who have not beaten any record from anywhere in the world. Okay, he is the champion in 2017 and 18 in Bahrain. So that means what I'm telling you, if any the kid who doesn't allow him to do the biking, I feel like, road racing is not good. I don't encourage anybody who's doing the road racing. अभी बाइक बाहर लेकर चला गया, he wanted to race. There's an adrenaline in him. Every young kid wanted to race. But if you have you have a talent in you, so don't race on the roads. Come to the circuit. It's like, boxing on the ring. Like, if you're a big man, so you don't have to hit somebody who's like, very weak. If you are a really good man, I mean, you're a really strong man, so come to the ring and show your power. So same here, like, if you're a good rider, how you show your potential? So come to racetrack and show your potential, isn't it? So I encourage every single kid out there who's interested in racing of the biking, please join somewhere where you can show your talent.
So what we mean is called responsible racing. It's a responsible racing. आपको बाइक चलानी है, आप चलाओ. You want to ride a super bike, great. But not on the roads. Come on the tracks. Tracks में safety gear है, teachers है, train करेंगे आपको. And that's where talent वहीं से निकलता है. Because when you are in a controlled environment, आप वहाँ पर हमारे trainers के साथ, the whole team of Nasir Bhai, the whole team that's there in Dubai, when you work with them, you get trained. And that's when you have responsible racing, not irresponsible. So we are here to promote that also. नासिर सर, कहीं ना कहीं इंडिया में रेसिंग की वजह से काफ़ी जाने जाती है और रेगुलर बेस पे डेली बेसिस पे जाने जाती है, कहीं ना कहीं सेफ्टी इशू होता है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? again Safety issue in Dubai. सेफ्टी इशू एग्जैक्टली लाइक अगर मैं अपना खुद का मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले दिन जब बाइक बाहर लेके गया था, आई केम बैक एंड थॉट अबाउट माई बाइकिंग राइड व्हाट आई हैव डन जस्ट 2 minutes ago. I went to the place where it is 100 kilometers from my house and came back and I just thought myself like अगर मैं गिर जाता, मेरा स्पीड था 200 प्लस ऑन द स्ट्रीट, अगर मैं गिर जाता तो क्या होता? ओके, मैं अगर गिर जाता, आई वॉज विद द फुल गियर, मेरे पास जूता प्रॉपर जूते थे, इंटरनेशनल काइंड ऑफ गियर लाइक फुल सूट था, हेलमेट सही था, ग्लव्स थे, सारी चीज़ें थे. इधर जो बच्चे जो हैं रेस करना है उनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास अवेयरनेस भी नहीं है कि रेस कैसे करना चाहिए, बट चले जाते हैं, बाइक चलाते हैं और गिरते हैं, करते हैं सारी चीज़ें. लेकिन आप जब एक रेसर का जो मेंटालिटी जो है, इट इज़ नॉट ओनली रेसिंग, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तब जाके वो अगर बाइक के गियर के साथ में चला गया और बाइक आराम से चला गया, सारी चीज़ें ठीक है. तो सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेनिंग अभी हम लोग देंगे, ऑलरेडी मैं ट्रेन हो चुका हूँ और मैंने काफ़ी 10 साल से रेस कर चुका हूँ. आई नो एवरी बिट ऑफ रेसिंग हाउ इट इज़, बट आई वांटेड टू एक्सप्लोर दिस टू इंडियन किड्स. I want to see the talent in them, and inshallah like we'll be coming soon to India by next year, by as we have discussed, like DSBK is coming to India next year 2024. That's my main goal. इसके अलावा ना कहीं ना कहीं जगह इंडिया जो स्पोर्ट्स में हमें काफ़ी आगे है, जी. लेकिन इस फील्ड में, रेसिंग के फील्ड में काफ़ी पीछे, मतलब दूर दूर तक नाम तक नहीं है, तो इसके पीछे क्या रीज़न आता है? I believe कि इंडिया में रेसिंग हैज़ ग्रेट पोटेंशियल. Every boy loves bikes. Every man loves bikes. ये आप, it's not for you or us, it's everybody. But currently you already have the MotoGP Bharat. We always will support what is the right thing. And it was a good initiative. So the industry is there, the potential is there, आवाम भी है, riders भी है. That is the reason why Nasir Bhai thought, मैं Indian हूँ, I would like to come to India and give something back to my motherland. Why not this? Because we are here to promote racing. We will do it, but responsible racing. Yeah, the reason is why India doesn't have that kind of a exposure, because इस रेसिंग के लिए you need this circuit, जो इंडिया में सर्किट नहीं है. 2 ही जगह हैं, ये गुड सर्किट है जो इंटरनेशनल लेवल का है, और दूसरा सर्किट है मद्रास में, जो मद्रास इज चेन्नई इज़, और एक सर्किट है उधर. एंड दैट सर्किट इज़ ओनली गुड फॉर लोअर सीसी विच इज़ बिलो 600 सीसी, आई थिंक सो. और जो हमारा जो MotoGP होता है सारे 600 सीसी टू 1000 सीसी और डेफिनेटली से 300 सीसी होता है, बट स्टिल इट इज़ पोटेंशियलिटी इज़ वेरी लेस. मेन थिंग इज़ लाइक वी डोंट हैव अ सर्किट इन इंडिया मैनी प्लेसेस. अभी आएंगे क्योंकि MotoGP आ गया, थैंक्स टू हमारे आदित्यनाथ जी जो यूपी के मिनिस्टर हैं. तो एटलीस्ट अवेयरनेस आ गया है लोगों के पास, और एक वे है, जस्ट बीइंग अ क्रिकेटर और फुटबॉलर और हॉकी प्लेयर, वी हैव अ वन मोर स्पोर्ट विच इज़ हर बच्चा इधर बाइक चलाता है. दो मे बी कोई फुटबॉल नहीं खेलेगा, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलेगा, लेकिन बाइक ज़रूर चलाएगा, चोरी करके चलाएगा लेकिन बाइक चलाएगा. राइट. सर मैं जाना तो यूथ है, आजकल युवा है, काफ़ी सारे रेसिंग में है, आपसे अगर ट्रेनिंग करना चाहते कितने खर्चा लगेगा, ट्रेनिंग खर्चा ऐसे ट्रेनिंग क्या है? सी ट्रेनिंग के लिए ये स्पोर्ट जो है थोड़ा महंगा वाला स्पोर्ट है. इट इज़ नॉट वेरी चीप बिकॉज बाइक काफ़ी कॉस्टली है, और सर्किट क्योंकि वजह इसलिए है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इट्स नॉट एनीबडी कैन नॉट प्ले एनीवेयर, इट हैज़ टू बी ऑन द सर्किट. अगर उसको प्रोफेशनली करना है सर्किट है. और एक्सपेंस की बात है कि शायद हो सकता है कि जब तक इंडिया ग्रो नहीं करेगा इस सेक्टर में, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस सेक्टर में ग्रो नहीं करेगा, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं आएगा, तब तक सर्किट नहीं बनेंगे ज़्यादा, क्योंकि सर्किट इज़ एक्सपेंसिव. आई थिंक गवर्नमेंट शुड हेल्प द पीपल ऑफ इंडियन यूथ कि थोड़े 2-4 सर्किट बना लें कि इधर भी जिसको सीखना है जाके सीख लें.
जैसे सर्किट्स बढ़ेंगे रेट्स वैसे डाउन हो जाएगा. आज के दिन सिर्फ बुथ सर्किट में है, जिधर तक पहुंचना ही बड़ी बात है. छोड़ो बाइक चलाना, उधर तक पहुंचना है. समझो कि अभी मुंबई से दिल्ली जाना है तो इट्स वेरी बिग टास्क है. बच्चा जाएगा ही नहीं. अगर समझो कि हर स्टेट में एक एक सर्किट हो तो बच्चा डेफिनेटली. और इंडिया ऐसी जगह है, इंडिया में टैलेंट इतने कूट कूट के भरा हुआ है. सबको पता है कि इंडिया के बच्चों में एड्रेलिन वैसे भी होता है. आई मीन इट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, है ना. लेकिन बच्चों को एक एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी होता है. अगर सर्किट ही नहीं है तो होगा नहीं. अगर बाइक तो कैसे भी ले लेगा, लेकिन सर्किट होना ज़रूरी है. तो एक दिन हो जाएगा. अगर डाउन 10 years, आई एम श्योर लाइक इंडिया विल बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इन मोटर जीपी. दिस इज़ व्हाट माई थिंक अबाउट. तब तक मैं कितना देख सकता हूँ नहीं पता है, लेकिन गिवन चांस आई वॉन्ट टू गिव माई 100% टू यंग इंडियन किड्स. आई वॉन्ट टू ट्रेन दैम, मे बी ब्रिंगिंग दैम टू दुबई, मेकिंग अ गुड पैकेज के लुक्रेटिव हो जाए कि ये पैकेज है, इस पैकेज में दिल्ली जाने से अच्छा है कि मैं दुबई जाके कर रेस करके मैं प्रैक्टिस करके आऊँ. आई एम देयर टू सपोर्ट एवरीवन. इवन इफ टुमारो एनीबडी ऑफ यू वांट टू कम टू दुबई एंड रेस टू प्रैक्टिस, आई एम देयर विथ यू गाइस. Yeah, Because just we have the trainers, we have the safety equipment, we have the people to teach you balance, power, everything. We have lectures, we have talks, we have on-site trainers and medical facilities. Everything is there. So it is basically the more you understand and learn, the more आप उतना freedom से confidence से track पे जाओगे. So this is just a क्या बोलते हैं ना, a kind of a शिक्षा, a kind of a teaching, a tutelage. इसकी तरह आप फिर track पे जा सकते हैं. सर जो आजकल यूथ है ज़्यादा जो है राइडिंग करना रेसिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है रेसिंग के दौरान जो है हादसा भी होता है. क्या लगता है कि पहले ट्रेनिंग के बाद जो है See, ट्रेनिंग के बाद वैसे see to be very frank with you, अगर कोई ठीक से ट्रेन किया होता है तो वो इतने स्पीड पे रोड्स पे नहीं चलाएगा. रोड्स आर मेंट फॉर ड्राइविंग, ट्रैक्स आर मेंट फॉर रेसिंग. रोड्स ड्राइविंग के लिए होते हैं एंड ट्रैक्स रेसिंग के लिए होते हैं. तो जो बंदा रिस्पॉन्सिबल रेसिंग करता है, अब इस रूम पे हमारे बहुत फ्रेंड्स आए हुए हैं, दे ऑल हैव सुपर बाइक्स, देयर इज अ बाइक आउटसाइड ऑल्सो. वो ही वोंट बी रेसिंग, दैट्स इररिस्पॉन्सिबल. जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट as DSBK, we're trying to promote this, is responsible. बड़ी बाइक का ये मतलब नहीं कि आप स्पीड पे चलाओ. आपको स्पीड करना है, ट्रेनिंग करना है, आप ट्रैक्स पे आइए. आप रोड्स पे रेस्पॉन्सिबली चलाइए, बिकॉज हर किसी के फैमिली होते हैं, लव्ड वंस होते हैं. आपको वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आगे आदमी के लिए भी रखना पड़ेगा. आपसे अगर कॉन्टैक्ट किया जाए, जो गाँव छोटे छोटे गाँव में जो सिटी में है, जो आपसे कॉन्टैक्ट करें, आपसे सर्विस करना चाहें, किस तरह कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे? कॉन्टैक्ट अपना DSBK का वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे जाएँ, उसमें कॉन्टैक्ट सारे डिटेल हैं और वी आर देयर टू सर्व यू. एंड वी हैव पीपल टू आंसर द क्वेश्चंस ऑल्सो. ऐसे नहीं कि हमने वेबसाइट पे लिख दिया है. वी हैव पीपल टू आंसर द क्वेश्चंस. आप क्या करते हैं, आप क्या चाहते हैं. एंड enquiry is also something like education for us. We have to educate people who come to us, if they are meant for it or not also. It's not just about giving out information. We want to tell them, we want to ask them, we want to understand them, ताकि we can guide them in the best possible manner. in terms of costing, how expensive this whole process is? See, we can't give out numbers, no offense, but it's not very expensive if you compare it to going to a local circuit in India, considering you only have 2 circuits. In Dubai, you already have the concept of travel and international travel, but it's very close, the facilities are there, and it is pretty economical if you want to go to a big circuit in India, because we have the facilities with us. Agar if you see like compared to prices, we have not worked on the prices yet, but still I feel like I'm being an Indian, I know the cost of the booth circuit, how much they're going to charge me, and so we are making a package where any Indian anywhere, any part of India, is it he's from Tamil Nadu or he's from Kerala or he's from North, anywhere, we make such a package that he can reach to Dubai more cheaper than what he can do it in India. That's a definite target for me. Yeah. What is the message that you would like to give out, just not painters, but to all enthusiasts? Yeah, my main only one message to my Indian brothers, who's brothers or sisters, who is enthusiast for the racing or for the riding the bikes. Please ride bikes with the full gear. Don't race on the street. If you want to race, you have DSBK now. Please come to DSBK. I'll make sure the people of India will love to be there in DSBK, looking at the cost of it and the talent. We will give you more talent because we have people who is raised in all over the world, who is from Europe, who is from UK, who is from US,
we all have a trainers. You know, you name it, we can make them. We can make them our riders. For I'm telling you, we will get a racer from India soon. Down few years. This In is a my podium promise. finish. Podium finish. Yeah, that's Podium that's the finish. thing, yeah. In 2 years, we expect to train something great, somebody great from India to do a podium finish. Also, I wanted to before we wind up, like to also check with you, other than children and men, do you also have this facility for women? Riding is a open gender thing. Yeah, We have- my daughter is now, she is 14 now. She wants to practice. She wants to race, and I'm not stopping her. So I'm going to train. I started training her now. It is called mini GP bikes. Mini GP bikes. So I think India also knows about the mini GP bikes now. To start with, anyone, is it a girl or boy? So they should start from mini bikes, which is 200 cc, 160 to 200 cc. So they can start with. Even if you want to learn tomorrow, so I can teach you. Like, you know, it's genderless. Like, you know, you can be a girl or boy. So it's all upon your interest. Yeah. Anything else, anyone? Thank you so Thank you so much. much. Thanks for being here. Thank I'm you. so glad. I'm so thankful to you guys. Thank you to DSB का जो ये initiative है, what would you like to say? आई थिंक इट वॉज वंडरफुल. आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू नासिर भाई, और जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जेन्युइनली इंडिया में अगर हम देखते हैं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ हमारे वर्ली सी फेस में यहाँ पर, बिकॉज इट इज़ मतलब लोगों में इंटरेस्ट बहुत है, पर आई थिंक उसको सपोर्ट करने के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं है. सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट यू नो इज़ ऑसम, एंड अगर ये आता है यहाँ पर तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा. Hansa. Well, I liked one point which he said that नासिर जी कि बाइक सब चलाते हैं और हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमें बाइक से डर लग जाता है, अरे यार कौन निकला यहाँ से, जस्ट बिकॉज उनको शो ऑफ करना होता है कि मेरे पास बाइक है और मैं चला रहा हूँ. तो वो सेफ्टी का जो गेयर है वो जो ध्यान में नहीं रखते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ इट. एवरी टू व्हीलर पर्सन शुड डू दैट. तो आपको अगर रेसर बनना है, देयर आर ट्रैक्स, आप उसको प्रोफेशनली करिए, सीखिए और जाइए. व्हाई डोंट यू ब्रिंग लॉरल्स टू इंडिया? That's what I would say. Rather than doing racing on the roads and making other people's life hazardous, वो नहीं होना चाहिए उसके लिए. एंड इस इंडिया का नाम भी रेसिंग में आए, व्हाई नॉट? Of course, like I'm happy अभी Yeah. जैसे एशियाड के अंदर इतने सारे मेडल्स आ रहे हैं जिनको हमने कभी हराया नहीं, उनको हम हरा रहे हैं. We should make name in GPs also. Why not? As women, biking को लेके आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव? ऑनेस्टली आई थिंक एज अ वुमेन पर्सनली स्पीकिंग मुझे कभी बाइक में एक डर रहा है, जैसे हाउ शी सेड कि यू नो कि बाइक का सोचकर ही एक लगता है डर, तो कभी वो उसके बारे में सोचा भी नहीं कि ये अवेलेबल है मेरे लिए, ये मुमकिन है, मैं कर सकती हूँ. एटलीस्ट पर्सनली मेरा कभी ध्यान नहीं गया, बट मे बी अगर ऐसी फैसिलिटीज़ है, ऐसी अकेडमी होगी, ऐसी ट्रेनिंग होगी तो मे बी मैं भी सोच सकती हूँ इस बारे में. So yes, it is a very good initiative coming down here, and I think it's high time the India also have us. Yes. Yeah, so I just feel कि बचपन से मेरे घर में जैसे फ्रेंड्स वगैरह आते थे, देवर सबके पास बाइक हुआ करती थी, क्योंकि तब एक होता था कि बाइक है हमारे पास में. तो आई सर मुझे भी बाइक सीखनी है. सो आई यूज्ड टू राइड बाइक, मतलब बुलेट तक किया है, पर इतने सालों से छूटने के बाद में अभी ज़्यादा थैया हो गया मेरा बट येस आई वुड लव टू. और जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज एजुकेशन हाउ टू राइड अ बाइक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नट खरीदने से आपको सहूलियत नहीं मिलती है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, जो भी बहुत ज़रूरी, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. So I'm very happy this initiative is there. So एंड लड़कियाँ बाइक चलाते हुए हमेशा बहुत अच्छी लगती Oh हैं. yeah, oh yeah. I would love to sit on a book. I mean, this bike which is outside is also very. Yeah. I would love to sit on that and ride. आपको बाइक में बैठे कितना आपको लगता है खुशी हो रहा है बाइक में बैठ के? देखिए क्या है ना, अदाकारा को बस बाइक मिल गई, एक्टिंग कर दो, हाँ चला लिया, फीलिंग ले ली, बहुत बढ़िया बात है. जब एक्चुअल करने को मिलेगा तब पता नहीं क्या होगा. आई होप आई एम सेफ. या बट सेफ्टी मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ बॉम्बे की और इंडिया की सड़कों पे चला पाऊँगी, क्योंकि मुझे डर रहेगा. जब मैं गाड़ी में बैठ के डर जाती हूँ कि कोई बाइकर निकल रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट टू से.
बट या अगर मुझे सीखने का मौका मिलेगा और अगर नासिर जी सिखाएंगे तो व्हाई नॉट, आई विल डेफिनेटली जंप ऑन द थिंग एंड लर्न इट. थैंक यू सो वेरी मच. Thank you, थैंक everybody. यू, Thank थैंक you. यू, थैंक यू. Tina, you're looking lovely as always. Thank You're you. here for DSBK Superbike Racing being announced to come to India now. What would you like to say? And as a sport in totality, what's your opinion? I think it's amazing. I think it's so great that so much of this is now coming to India. I think the world is looking to India now for, in terms of fashion, in terms of sport. I think it's so exciting. This is one of the most exciting times to be in India. I remember many years back, when I started doing advertising, I used to be one of the few girls in India who used to ride a bike. I've done a lot of ads where I used to ride a bike, and over the years I've seen so many young women have taken to biking. So many young women are, getting onto their bikes and being, avid bikers. It's really cool. I think it's a really cool sport, and I'm very, very excited. आप अपने आप को फ्यूचर में देखते हैं टीना टू पार्टिसिपेट इन समथिंग लाइक दिस, योर पैशन मे बी फॉर बाइकिंग एंड रेसिंग एंड लर्निंग इट. Yeah, so my only worry until now used to be that biking is not, if you're doing it on the roads, it's not very safe. But I think with something like this, with something like a DSBK, because it's going to be done, with all the safety protocols in mind, I think I would love to give it a shot. For women out there, Tina, what message would you like to give out? We see a lot of aspirant women also who want to try the sport, get into it. Yeah, But they yeah. do have not a nod from family, because Yeah. I think in India we still consider this as a taboo. Women will not ride bikes, and Yeah. it's too heavy for them. What would you like to say? I think, this is what I've told women all my life. My first rule in life is to not listen to what people say. Don't listen to what your family say. Don't listen to what your neighbors say, what your chachi, mami, whatever says. Do what your heart feels like. Go after your heart, because it's one life. You only live once. Do everything you want to in this one life. Very well said, Tina. Thank you so much. Thank you. Any question, anyone? Thank you. I'm proud. I think it's a very proud moment, for such big brands to come in and present themselves in India. I think और भी सभी लोग, I think all should come in India, and they all should. But yes, now that we're talking about bikes, I mean, I'm a big fan of bike, by the way. So my college days have only so I used to ride those days. अभी तो खैर मैं खुद का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, but yes, I'm just happy to be a part of this amazing celebration. एक ज़माने में हुआ, कॉलेज के दिनों में हुआ करती, तो टोटल रफ एंड टफ लाइक अ टॉम बॉय. हाँ, वो मैं थी. तभी मेरे बाल छोटे से थे. अभी खैर my school friends they met me after some time and they were like, तू पूनम पांडे से इतने लंबे बाल हो गए. जैसे कट मारते हैं आप भी मतलब बड़ी हरकतें की. आई डोंट थिंक मुझे बोलनी चाहिए कैमरे पे. हमारे माय कॉप्स आर आल्सो वाचिंग दिस, सो नहीं, मैं बड़ी सीधी सादी बड़ी शरीफ लड़की हूँ, तो आई डोंट डू एनी सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स. Given us very much safety measures. So what are your views on that? Like, in India we don't have that education for the bikers. So what are your views? See, that is something I don't like, honestly. With respect to those Indians जो हेलमेट पहनकर चलाते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को हेलमेट, मतलब उनके लिए हेलमेट ना पहनो, इट्स वेरी कूल थिंग. दे नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट कूल. कॉलेज के दिनों में मैंने तो खैर मेरे बहुत ही करीबी दोस्तों को देखा, विद बाइक एक्सीडेंट्स एंड स्टफ, एंड आई एम ग्लैड दैट दे आर कमिंग विद सेफ्टी मेजर्स, एंड आई थिंक everyone should take care of their safety, because जान है तो जहान है. नहीं मैं सीट बेल्ट लगा के बाइक चलाती थी. हम जैसे लोगों को जरूरत पड़ती है सीट बेल्ट.
Okay, ma'am. So when you have said कि आप बाइक चलाते थे, so what were your favorite models? ये हम बात करते हैं। मतलब मैं नहीं चाहती मुझ में भी कुछ भी मैं I'm finding I've done all my मस्तीज in my life. I don't think किसी भी लड़की ने उतनी ज़्यादा हरकतें की जो भी मैंने करके सब छोड़ दिया है। मतलब मैं खुश हूँ मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। Last question. फनी इंसिडेंट जो हमसे आप शेयर कर सकते हैं बाइक राइडिंग की कॉलेज डेज में अभी आपने काफ़ी कुछ कहा है Last question, ma'am. I'm just thinking nothing was funny there. It was quite no. There was. Lastly, ma'am, what safety measures would you like to tell the audience? I think every guy and every girl, whoever is, doing all the wheelies and stoppies and all that, just a request, my beautiful people. कॉलेज के दिन ना वो थोड़े होते भी है ना, वी आर लाइक विद दिस गर्म खून, ऐसा कि हाँ हमारे हमको सब कुछ करना होता है उस वक्त लाइफ में, हम सबको अमिताभ बच्चन बनना होता है लाइफ में उस वक्त। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपके माँ बाप है पीछे, जो आपका वेट करते हैं, आप घर पे वापस जाओ, तो बस वो उतना आप सेफ्टी मेजर पकड़ के भी चलोगे ना, आप धीरे चलोगे। तो दैट्स इट। यस, थैंक यू। हाँ, मैं बिल्कुल, अगर मुझे बुलाएंगे मैं ज़रूर जाऊँगी। मैं खैर मैं दुबई में हाँ मैम आपने 2 बार बिग बॉस का ऑफर ट्राई कहीं तो अगर इस बार ऑफर आपको मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? I would love to. Yeah, I would love to. Thank you. DSBK बाइक ने इंडिया में ये फर्स्ट लीग ऑर्गेनाइज किया, लॉन्च किया। What are your views on this? So I have been a passionate rider myself for a pretty long time. I'm personally a Hayabusa fan, but I've been following World SBK, okay, and I'm a huge fan of both the Ducati team and the World SBK team. Ducati, I think the current owner is, the current champion is. World SBK is, I think, Raj Liogi or something like that. But World SBK is rocking in the super biking circuit, and so is Ducati. I'm looking forward to this particular. It's going to be the inaugural edition, right? So I'm sure it's going to be very exciting for someone who's been passionately following the World SBK and the Ducati racing. I am really looking forward to this one. So as you mentioned, like you're a big fan of bikes and racers, what are your favorite models? My personal all-time favorite is, a Hayabusa Kawasaki. But I'm also now in love with Yamaha and Ducati. Both are actually right now Ducati in the Ducati racing, and World SBK is led by Yamaha. So off late I've started liking these two also, but my all-time favorite has been Hayabusa. No, okay. When the commercial passengers, Yamaha RX100, we've grown up on that. Okay, there's nothing like that. उसकी जो kick जो उसकी एक stereotype trademark जो उसकी kick है, आज भी चला देंगे 20 साल के बाद भी तो वैसी ही रहेगी. So RX100 तो हमारे खून में है. But from a racing point of view, Hayabusa has been my favorite all throughout. Ducati and Yamaha are now also, something that I'm following. Since the time I've started following World SBK, Yamaha has become one of my top favorites. Right. Also, DSBK has launched, they have started the league and also with the safety measures. And Right. we as in India, we don't have that, we are not that educated I agree. about racing. And what are your views that once they are here, they are completely settled, people will get to know about them. What are your views when we drive a bike? Right. The safety measures. So let me tell you, despite being a passionate biker myself, and also I've done a couple of Himalayan car rally seasons, I don't remember a single minute, a single moment when I would have not followed, complete driving instructions, including safety gear. When I'm out, I can actually drive at a speed of 220, 240, in a car.
but I don't remember last when did I ever cross even 100, 120 on a clean highway. So I personally am very cautious, and I request everyone to follow the basic, and it doesn't take a lot of effort to understand, the basic standard safety hygiene protocols when it comes to either driving a car or riding a bike. One must. It should be, we must internalize it. It should run in our blood. So lastly, what would you like to tell to DSBK? Like they are starting with Oh, yes, absolutely. Like the way World SBK is set a completely different level. I'm sure it's going to be equal level of standard of execution. I'm looking forward, and I wish them a fantastic first inaugural season and a great amount of excitement. Looking forward. Thank you so much. Right. All the best.